Hello friends, welcome back to our channel Let's Crack OPSC. Hope all of your preparation going well, and I hope you people are preparing well for you can say the interview or the future prelim examination. Friends, today we will be discussing a very important topic, that is explain the ideals contained in the preamble of our constitution. स्पेशली एटा जो क्वेश्चन टा अच्छी बहुत इंपोर्टेंट एटा मेन पर्सपेक्टिव रु भी आउ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव रु भी तो आपन को पचारा जाई पारे कि प्रीएम्बल ऑफ माने आइडियल्स कोन प्रीएम्बल्स रो आइडियल्स कोन तो आपन कहिबे कि फर्स्ट रे प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल रो कोन अछि कि सेटा रे कोन फिलोसफी और ऑब्जेक्टिव्स कोन स्पेशली सेठा मेंशन अछि हमर गोटे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन इट रिप्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स and the history behind its creation and the core values principles of the nation generally कोन preamble कोन represent करूची गोटे it intention is to framers of history behind its creation माने preamble reflect करूची जो माने हमर फ्रीडम फाइटर थिले से माने कोन ए विषय रे डिस्कस स्पेशली कोन पई ये करिसंती. The preamble basically gives the idea of following objects, that is a source of the constitution माने आमर constitution और source कोन को source रो आम constitution important माने objectives any important thing है आमे आनिचु nature of Indian state आमर Indian state रो कोन nature कोन then statement and its objectives स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव कौन थिला हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन हमरो प्रीएम्बल रे हम कोन जना पड़े हमरो डेट के को दिन हमें सेटा को एडॉप्ट करथिलु हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडियाज बिहाइंड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वे लेड बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपण ए जो क्वेश्चन टा एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रीलिम पर्सपेक्टिव रू भी जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केबे आसीतिला आपण कहि परिबे adopted by the Constituent Assembly. Jawaharlal Nehru जो objective resolution let me know in the comment section. Jawaharlal Nehru रो objective resolution केबे आसीतिला Jawaharlal Nehru रो objective resolution टा कोन सेटा आमे Constituent Assembly कोन करथिले adopt करथिले January 22 1947 रे. Although not enforceable in court, preamble state the objective of the constitution. बहुत गुडी जजमेंट रे एटा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट रे एटा मेंशन अछि कि प्रीएम्बल टा को कोन आमे enforce करि पारिबे नाही किंतु acts as a aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous माने जेबे भी लैंग्वेज ता हमगु लागे किछि इंटरप्रिटेशन रो रिक्वायरमेंट अछि ताहले मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पेशली द जजेस दे रेफर टू प्रीएम्बल एज द गाइडिंग यू कैन से लाइट then components of the preamble ro components kon अछि it is indicated by the preamble that the source of authority of the constitution lies with the people of India. Specially आपन को पता जाई पारे what is the specially it is the source of authority lies with whom एटा गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हेई पारे कि who is the source of authority of preamble specially तो आपण कहिबे बी people of India. The preamble declares India to be a sovereign socialist secular democratic republic. तो preamble कोन आपण इंडिया को कोन डिक्लेयर करूचंती कि sovereign socialist secular democratic republic. ए जो सिंगल जो वर्ड अछि sovereign आमे डिस्कस करिबा sovereign कोन socialist कोन secular कोन democratic कोन republic कोन. The objective stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity and maintain unity and integrity of the nation. Especially objectives stated in the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens. माने समस्तंकु न्याय देबा फ्रीडम देबा स्पेशल लिबर्टी इक्वालिटी समस्तंकु समानतार अधिकार देबा एंड प्रमोट फ्रैटर्निटी समस्तंक मध्य रे यू कैन से ये भातृत्व भाव आनिबा आउ यूनिटी और इंटेग्रिटी यूनिटी माने समस्तंकर मध्य रे एकता आउ अखंडता आनिबा ए जिंसटा आनिथिले एवं दिस पर्टिकुलर द डेट इज मेंशनड इज November 26 1949 very important आपन को पता जाई पारे कि प्रीएम्बल केबे अडॉप्ट हितला November 26 1949 स्पेशली देन वी की वर्ड्स इन द प्रीएम्बल कोन वी द पीपल ऑफ इंडिया it indicates the ultimate sovereignty of the people of India. Sovereignty means independent authority of the state not being subject to control of any other state or external power. Generally eta कोन करूची कि ultimate sovereignty of the people specially
sovereignty means independent authority of the state. एटा अर्थ होची कि एटा गोटे total independent authority of the state not being subject to control of any external other state or external power. Say for example during British time बहुत माने ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थिला सी आम इंडिया पई बहुत गुडिया लॉ पास करथिले किंतु स्पेशली प्रिएम्बल एटा अडॉप्ट करिबा परेठु स्पेशली द कोन आमे डिसाइड करलु कि आमे कोन माने आमे को डायरेक्शन रे आमे आगु को जिबु. सोवरेन मींस द टर्म दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी and it is not dominion of any other external power. तो मु आपन को जेमिति कहिली कि इंडिपेंडेंट हबा आगु ब्रिटिश माने हमकु बहुत मात्रा रे कंट्रोल करूथिले तो किंतु सोवरेन हला परे कोन हला कि आमे अथॉरिटी इज द वी आर नॉट द डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर दैट इज ब्रिटिश मानकर पावर जो थिला सेटा सल्ला. देन इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैड द पावर टू मेक लॉज व्हिच आर सब्जेक्ट टू certain limitation. किछि limitation अछि जोटा कि माने जो जति सब लॉ पास करिवे ता ऊपर किछि limitation अछि. Then socialist, what is the meaning of socialist? The term means achievement of socialist end through democratic means. Socialist means एटा रे the socialist रो meaning होछि term means achievement of social ends माने किछि social end को हमें achieve करिवे through democratic means. Democratic means रे हमें social ends को achieve करिवा माने equality को achieve करिवा through democratic means. Specially it holds faith in a mixed economy where both private and public sector coexist side by side. माने एटा कहूची कि एटा गोटे डेमोक्रेटिक मीन्स रे हमें अचीव करिबा किंतु कोन एटा मिक्स्ड इकोनॉमी हबो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को कोएग्जिस्ट करिवे. It was added in the preamble in the 42nd amendment 1976. तो एठी आपन को गोटे क्वेश्चन पचारा जाई पारे इन ऑब्जेक्टिव इन प्रीलिम्स कि सोशलिस्ट व्हेन द सोशलिस्ट वर्ड वाज added in which amendment. तो आपण कहि परिबे कि 42nd amendment 1976 रे एटा ऐड करा जाइतिला. Secular, the term means that all religions in India get equal respect, protection and support from the state. It was incorporated in the preamble by 42nd constitutional amendment 1976. Then democratic, the term implies that the constitution of India has established a form of constitution which gets its authority from the will of the people and expressed in the election. The term implies the constitution of India. एटा तार मीनिंग होची डेमोक्रेटिक होना established form of a constitution which gets its authority from the will of the people. माने जो माने popular will of the people अर्थ होची popular will of the people. Specially in an election रे जो पार्टी रो मेजॉरिटी आसीबो सही पार्टी पावर को आसीबे. That is the democratic means. इन थ्रू डेमोक्रेटिक माने गोटे इलेक्शन परे जो पार्टी रो आइडियोलॉजी को पॉपुलर सपोर्ट मिले से पार्टी पावर को आसे और से पार्टी ही they will get the opportunity to frame the direction of the country for another 5 years. Especially then republic, what is the meaning of republic? The term indicates that head of the state is elected by the people. आपन को even interview रे पछारा जाय पारे कि गोटे constitution रे एठी लिखा है republic. What is the meaning of republic? The head of the state of the particular state is elected by the people. In India, president of India is the head of the state. Objectives of the Indian constitution. Indian constitution रे objectives कौन? The constitution is the supreme law and it helps to maintain integrity in the society and to promote unity among the citizens to build a great nation. The main objectives of the constitution is to promote harmony throughout the nation. Factors which help achieving objectives are justice. को factor अछि जोटा कि हमरो objectives को achieve करिया रे help करे. That is justice. It is necessary to maintain order in the society that is promised through various provisions of the fundamental rights and directive principles of state policy provided by the Constitution of India. It comprises 3 elements which is social, economic, political. Objectives direct eta kono achi social, economic, political. Social justice kono? Social justice means that a constitution wants to create a society without discrimination on any ground like caste, creed, gender or religion. Social justice रो अर्थ होची कि constitution जोटा कि आपन को क्रिएट करिवो discriminate means without discrimination गोटे ground क्रिएट करिवो without any caste bias, creed bias or gender bias or religion bias. सेटा होची सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस कोन? आपन को जदी पचारा जिवो व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस, टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक जस्टिस. इन इंटरव्यू आल्सो इट कैन बी आस्क्ड. देन इकोनॉमिक जस्टिस मींस no discrimination can be caused by people on the basis of their wealth, income and economic status. Every person must be laid equally for equal position and all the people must get opportunity to earn their living. हार अर्थ होची कि कागु भी डिस्क्रिमिनेट करा हबनी, समस्ते इक्वल अपॉर्चुनिटी पाइबे टू ऑल पोजीशन, सब पोजीशन पई गोटे इक्वल अपॉर्चुनिटी पाइबे टू अर्न देयर लिविंग. देन व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? आपन को गोटे क्वेश्चन पतारा जाई पारे व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस मींस ऑल पीपल हैव
an equal and free and fair right without any discrimination to participate in political opportunities. तो एठी आपन को क्वेश्चन पचारिबे कि आपन व्हाट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज माने वोट दबाठू आरंभ करिकी टू होल्ड एनी पॉलिटिकल पोस्ट under the constitution of India. आपण कोई भी पोजीशन मींस फॉर एग्जांपल ग्राम यू कैन से वार्ड मेंबर टू आरंभ करिकी आपण पंचायत लेवल रे आपण सरपंच टू आरंभ करिकी एमपी एमएलए मंत्री चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड एनी काइंड ऑफ ए पोस्ट. If when you are equally eligible to hold any kind of a political post, that means you have got the political justice. Means आपन को पाखरे से पावर अछि जो जरिया रे आपण एठी होल्ड करिवे पोजीशन. Equality, the term equality means no section of society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discrimination. Everyone is equal before law. आर अर्थ होछि कि आपण सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सब सेक्शन को कोन पाखरे तांको पाखरे इक्वल अपॉर्चुनिटीज अछि. देन लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी? द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, पॉलिटिकल व्यूज, बिहेवियर इन सोसाइटी. देन आपण कहि परिबे कि डजंट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग. ए पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ. माने आपण माने लिबर्टी अछि किंतु सेटा किछि लिमिटेशन सहित आपणकर लिबर्टी अन्यर लिबर्टी को हार्म न करे जेमिति. सो एटाले लेखा हिछि इट द पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय लॉ. लॉ किछि जो लिमिटेशन देइछि से लिमिटेशन रही आपण करि परिबे. माने जो माने लिबर्टी अछि आपन को फ्रीडम अछि आपन एटा को एक्सरसाइज करि परिबे. व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मींस ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल. एटा होछि गोटे फीलिंग जोडा कि ब्रदरहुड रो फीलिंग. एबे माने जेबे भी आपन को पचारा जिवो फ्रेटर्निटी कोन, इट इज ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. ओके, इंपोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. Then it provides a way of life. It includes fraternity, liberty, equality as the notion of happy life and which cannot be taken from each other. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. तो आपण एटा जानंतु. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस ए सुप्रीमेसी ऑफ ए फ्यू ओवर मेनी. जदि आमे इक्वल विदाउट इक्वालिटी जदि आमे इक्वालिटी न देकी लिबर्टी दबा तो किछि लोक कोन करिवे अन्य ऊपर राज करिबा स्टार्ट करिवे. स्पेशली माने गोटे सुप्रीमेसी न आसु समस्ते इक्वली समस्तंकु बिहेव करंतु. फॉर दैट रीजन इक्वालिटी इज वेरी इंपोर्टेंट. इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. जदि समस्तंकु मु कहिबी इक्वली ता काहा को लिबर्टी देबिनी ताहले कोन होबो कि किछि लोकंको पाखरे मेरिट अछि सेमानकर लिबर्टी जदि लिबर्टी न देले सेमानको इंडिविजुअल इनिशिएटिव दा लॉ माने हार्म होबो. विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ ए फ्यू ओवर द मेनी. जदि फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड रहिबनी ताहले लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू. माने किछि लोकंकर आधिपत्य स्थापन करिबागु माने माने गोटे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिवो. तो स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल यू कैन से आपन को पचरा जाई पारे. स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल रो कोन बेरुबारी केस आपन को इवन मेंस रे भी लिखिबा रे एई सब केस को आपन को मेंशन करले आपन को भलो मार्क आसीबो. बेरुबारी यूनियन केस कहिबे कि आर्टिकल 143 सेक्शन ए रे कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट रिलेटेड टू बारीबारी यूनियन एक्सचेंजिंग ऑफ एनक्लेव्स व्हिच वर डिसाइडेड consideration by the bench consisting of 8 judges. बेरुबारी यूनियन रे कोन इतले द कोर्ट स्टेटेड द प्रीएम्बल इज key to open minds of the makers but it cannot be considered as a part of the constitution. बेरुबारी यूनियन रे कोन कहितले जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कि एटा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं. तापर आसिला केशवानंद भारती जजमेंट. इन द केस फॉर द फर्स्ट टाइम ए बेंच ऑफ 13 judges assembled to hear a writ petition. The court held that preamble of the constitution will now be considered as a part of the constitution. माने जो बेरुबारी यूनियन केस रे जो सुप्रीम कोर्ट रो पॉइंट ऑफ व्यू थिला सेटा केशवानंद भारती केस रे सेटा चेंज हला. दैट इज नाउ द preamble becomes a part of the constitution. Preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition but it plays an important role in the interpretation of the statutes and provisions of the constitution. So it can be considered that the preamble is a part of the introductory part of the constitution. In 1995 case यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 रे गोटे केस आस्तिला यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया. In the Supreme Court has once again held that the preamble is an integral part of the constitution but it is not directly enforceable in the court of justice in India.
एटा कोन गोटे जस्टिस ऑफ माने गोटे इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल माने प्रिएम्बल को आमे एनफोर्स करा जाई परिबा नहीं फॉर एग्जांपल आपण गोटे प्रिएम्बल रो किछि पार्ट जदी इंप्लीमेंट होउनी तो आपण कोर्ट को जाई परिबे नहीं कि सरकार ए जो पार्ट ता प्रिएम्बल रो इंप्लीमेंट करूनी amendment to the preamble 42nd amendment act 1976 रे कोन हितिला आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती it was accepted that the preamble is a part of the constitution. As a part of the constitution can be amended under article 368 of the constitution, but basic structure of the preamble cannot be amended. Very important landmark judgment आपन को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऊपर ऑब्जेक्टिव आसी पारे एटा केबे आसीतिला एटा होची हमरो केशवानंद भारती जजमेंट एटा होची आपन को because of the structure of the constitution is based on the basic element of the preamble. As of now the preamble only amended once. हमरो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आसीबा जोगु preamble गोटे थर ही amend हेजी, that is 42nd amendment act 1976. The term socialist, secular and integrity were added. ये जो तीनटा वर्ड हमरो मूल जो संविधान रे नथिला किंतु सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर एडेड इन द प्रिएम्बल इन 42nd amendment act 1976. Socialist, secular were added between sovereign and democratic. Unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. For all of your you can say the memory, we have given this particular thing so that you can memorize it. Ideal of the preamble, what is it? Justice, socialist, sovereign, republic, democratic, you can say equality, fraternity, secular and liberty. So this is all about our this particular thing. I hope you like the video. Thank you very much.